Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video we are going to discuss about sliding round in IP University. So as you all know that in the first round of counseling, many of the students have not been allotted any colleges, and those who have been allotted colleges, many of them are not satisfied. So now you all must be considering what to do and what not to do. I hope that you must have paid your fee of 40,000. So now you have to know what is the sliding round, when it is announced, and I will explain in detail whether it is good for you or not, whether it is beneficial for you or not. So watch the video till last and subscribe to Kingdom of Learning if you have not yet. So now first of all we have to see what is this sliding round. So now actually means what will happen that after 3 counseling rounds, this year there may be only 2 counseling rounds as we are hearing. After the last counseling round, whichsoever will be this year, like second or third, only those candidates can participate in the sliding round who have been allotted a seat in the online rounds, but they have not freezed their seat, right? So such candidates can participate in this sliding round which is held by the university, but we have to see whether this will be held this year or not. Hopefully it must be held. So now what happens that in the way as in the normal rounds of counseling, like suppose you don't get an upgradation of seat, and you have not freezed your seat and you are still waiting that you want a better college, then this sliding round will be useful for you. And one more thing you have to see, there are certain conditions who are the candidates who can participate in this sliding round, that also I'm going to tell you. So now what happens that you must be wondering ki if you will wait for sliding round, your previous seat, suppose in sliding round you are not given any upgradation, same seat is being allotted to you again, then what will happen, then you need not worry, your previous seat will be retained. मीन्स इट इज़ नॉट सो कि आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी, आपने जो पहली आपकी लास्ट प्रेफरेंस थी वो सीट आपको मिल जाएगी. अब इसमें क्या कंडीशंस हैं कि what are the conditions for to participate in this sliding round. These are two very important things. One is that you should not freeze any seat, right? If you have freezed your seat already, then you cannot participate in sliding round. Another is that you have not withdrawn your admission and you have submitted 40,000 rupees. So now what does it mean, that if you have already paid the fee and you have got one college, but that is not the college of your choice, you are waiting that no, I want a better college. Now what will happen, let me explain it in detail. That suppose first round counseling is over, right, and you have been allotted college A, but you are not satisfied with that, you want you want a better college. So then what will happen, that you will not freeze your seat, you will leave it float, right, on float. If you want to know in detail, you can check my video on this in my IP playlist. So you have not freezed your seat, you have only kept it on float option. Now second round comes. In second round also you are given a college that may be better than the one which have been given to you, but still you are not satisfied. कि मीन्स आपको अभी भी है कि नहीं, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे इससे एक और रैंक का ऊपर का कॉलेज चाहिए जो आपने अपनी प्रेफरेंस में फिल कर रखा है. तो स्लाइडिंग राउंड में क्या होगा, आपको एक चांस दिया जाएगा वापस से एक और अपग्रेडेशन का, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क भी है. मीन्स अगर आप स्लाइडिंग राउंड में चले जाते हैं तो फिर आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी. मीन्स अगर आप उसमें ये रिस्क लेंगे कि सपोज़ आपने फर्स्ट राउंड में भी कोई सीट फ्रीज़ नहीं की, सेकेंड राउंड में भी नहीं की, तो अब आप स्लाइडिंग राउंड में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो लेना पड़ेगा. इट मीन्स कि सपोज़ आपने ऑप्शन 1 रिजेक्ट कर दिया, फ्रीज़ नहीं किया, ऑप्शन 2 भी आपने फ्रीज़ नहीं किया, तो आपने अपनी जो प्रेफरेंस में थर्ड ऑप्शन मीन्स उससे ऊपर का जो कॉलेज फिल किया होगा, होपफुली आपको स्लाइडिंग राउंड में वो मिल जाएगा. तो उसके लिए आपकी कंडीशंस हैं कि आपने फ्रीज़ नहीं की होनी चाहिए आपकी सीट,
और थोड़ा सा उसमें रिस्क फैक्टर है, बट अगर आपको सपोज स्लाइडिंग राउंड में ऊपर का कॉलेज नहीं भी मिलता तो वो जो आपने पहले जो आपका प्रेफरेंस था, जो लास्ट प्रेफरेंस में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था, वो आपका मिलेगा आपको, उसमें आपको डरने की बात नहीं है, राइट. सो यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स एंड बट हियर ऑल्सो इट ऑल डिपेंड्स कि मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द number of seats available in the college which you want and your preference list. मीन्स जो प्रेफरेंसेस आपने फिल की हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, बट उन कॉलेजेस में भी आपके लिए सीट होनी चाहिए. उसमें सीट्स लेटर ऑन बच जाती हैं, जैसे अभी फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चे नहीं लेंगे, सेकंड में भी कुछ बच्चे नहीं लेंगे, तो वो जो बची हुई सीट्स होती हैं वो बाद में स्लाइडिंग राउंड में स्टूडेंट्स को ऑफर हो जाती हैं. तो होपफुली यू विल गेट. सो थैंक यू एवरीबडी. शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब.